Demonstration from Data Analysis course topic, Decision Tree. Stay tuned till the end of the video to understand how EdBoomi works. Decision tree. Any idea about the term decision tree? No, ma'am. Okay. So when we apply this decision tree, it comes out in a tree form, like a tree-based model. Tree means one node. Jitni bhi category hai, then all these nodes. If other wants to split other nodes. So this is tree. ठीक है. Then it predicts the values of dependent variable based on the values of independent variable. For example, in a bank, we are just trying to understand that which customer, how many customers are repaying the debt. मतलब वो लोन ले रहे हैं बैंक से और कितने कस्टमर्स उसे रीपे कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कितने डिफॉल्टर है. तो बैंक लोन कोई ले रहा है यस या नो, डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब हमें ये प्रिडिक्ट करना है इस मतलब हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है इज दिस कि कौन से डिफॉल्टर हैं, मतलब वो किस टाइप के डिफॉल्टर हैं, ताकि आगे अभी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे पास जो भी डेटा है बैंक लोन का है, जेंडर है, एज है, जितना भी डेमोग्राफिक्स है ना, कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज किया उन्होंने बैंक का, कौन से बैंक में अकाउंट है, और सारी उसे एक पर्टिकुलर कस्टमर की सब डिटेल्स है अपने पास. ठीक है, ऐसे 1000, 2000, 3000 ऐसा हमारे पास डेटाबेस है. ठीक है, अब हमने एनालाइज करना है कि इस साल हमारा जितना भी डिफॉल्टर है ना, डिफॉल्टर मतलब कि उन्होंने रीपे नहीं किया है लोन. ठीक है, वो डिफॉल्टर होते हैं. तो हमें चेक करना है कि किस टाइप के लोग, अब कितने किया है 1000 में से. तो डिसीजन ट्री क्यों लगता है, ताकि प्रिडिक्ट कर पाए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज बैंक लोन, उसकी वैल्यू के बेसिस पे कि कौन डिफॉल्टर रहे थे बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वैल्यूज. ठीक है. तो ऐसी टाइप की जब सिचुएशंस आती है ना, तब हम डिसीजन ट्री यूज करते हैं. हम शॉपिंग मॉल गए, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स आर परचेजिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. It is actually considered as a non-parametric because it doesn't make any assumptions. ठीक है, आपको आई होप अब हम एंड पे आ गए तो आपको इसका डिफरेंस तो बहुत अच्छे से पता होगा. हाँ जी मैम, नॉर्मैलिटी वगैरह नहीं आती इसमें. राइट, कोई असम्पशन इन पे फॉलो नहीं होता है. ठीक, इज नॉट रिक्वायर्ड. Like we have outliers, missing data, improper codings, all these sort of things are there. जो हम कोई भी एनालिसिस करते हैं उससे पहले काफी दिन तो हमारी डेटा क्लीनिंग में चले जाते हैं. तो इसमें नहीं जरूरत, इसमें जरूरत नहीं है बिकॉज ये मिसिंग वैल्यूज पे भी वर्क करता है. अच्छा ठीक. ठीक है. The best part here is it handles mixed data type. What do you mean by data type? We have data called scale, nominal, ordinal. So it works on every data type. This type of technique is popular in banking, especially.
then telecom industry, and काफी सारी हैं, ठीक है। हमारे सुपरमार्केट्स होते हैं, शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, तो काफी सारी। Then we have CRT and then we have Quest. The another method which I am talking about वो है exhaustive check, which means कि पहले ये आया था फिर इसका ये अपग्रेडेड मॉडिफिकेशन हो गया है। तो हमारे मेन जो होते हैं वो ये 3 होते हैं। ओके, व्हाट इज दिस CHID? इट इज chi-square automatic interaction. CRT is classification and regression tree. Quest is quick, biased, efficient, statistical tree. So this is again one of the sample. देखिए यहाँ पे एक डेमो था, demo.sav, ठीक है, ये मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसमें बहुत सारे अपने पास वेरिएबल्स हैं, इनकम है, इनकम की कैटेगरी बनी हुई है, प्राइस ऑफ प्राइस मतलब स्केल डेटा भी है, व्हीकल की कैटेगरी बनी हुई है, इकोनॉमी है, स्टैंडर्ड लग्जरी है, एजुकेशन है, कितने साल वो करंट एम्प्लॉय के साथ में रहा है करंट कंपनी में, ठीक है, रिटायर्ड यस या नो, ठीक है। तो ये बहुत पूरा डेटा है अपने पास। कॉलर आईडी, ये इस जो भी डेमो फाइल ना जिस भी चीज की उसका अपने पास यहाँ पे रिलेटेड वेरिएबल्स है, ठीक है, कंपनी का ही डेटा है। आप देखेंगे ना, वायरलेस सर्विस, मल्टीपल लाइंस, वॉइस मेल, पेजिंग सर्विस, इंटरनेट, so all these company data. So now according to this data हम क्या assume करते हैं कि जेंडर भी है यहाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन, तो रिटायरमेंट देखते हैं, ठीक है, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं और कितने मतलब कितने यस है कितने नो, ठीक है, किस टाइप के लोग रिटायर हो रहे हैं। अब किस टाइप के लोग हो रहे हैं वो तो इन सब पे डिपेंड करता है, जितनी भी बाकी वेरिएबल्स हैं अपने पास, राइट। सो दिस मॉडल समरी टेल्स यू it includes the method used, variables are included and not included. So see here, this is the method, growing method we have used, dependent variable हमारा defaulter था, इस risk को हमें ठीक करना है। This table is a measure of trees prediction accuracy. Hope you have understood the concept of decision tree working in SPSS. Visit www.edboomi.com to enroll for the course now. For any queries, call or WhatsApp us at +91 800399265 and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so you won't miss any videos. Goodbye.